Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. I am your host, Sundar Mughal, a student of Greenwich University. Today, we are gathered here to commemorate the International Sign Language Day in order to preserve sign languages and deaf culture as prerequisites to the realization of the human rights of deaf people. The UN General Assembly proclaimed 23rd September as the International Day of Sign Languages in order to raise awareness of the importance of sign language for the deaf people. The Greenwich University strongly believes in unifying people from all walks of life, regardless of their backgrounds. We have always been at the forefront in providing the fundamental human rights, protection, promotion, and fulfillment in order to be a voice for people who need it the most. Pakistan Association of the Deaf was established in the year 1987. Shortly in 1999, it became a member of the World Federation of the Deaf. The Greenwich University has collaborated with the Pakistan Association of the Deaf and have worked collectively towards the mission of the organization. Okay, so while talking about the Pakistan Association of the Deaf, there are several programs running under its wing. Now I would like to divert your attention towards our screen to watch a video. It's a short documentary about the Pakistan Association of the Deaf. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेफ एक डेफ स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें डेफ बच्चों को प्री प्राइमरी से मैट्रिक तक तालीम दी जाती है और उनको हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई, फ्रिज एसी रिपेयरिंग, कुकिंग और दूसरे दीगर कोर्सेज सिखाए जाते हैं। डेफ पाकिस्तान एसोसिएशन का ज़िलाई इदारा है जो कि मुखय्यर हजरात के ताउन से चलाया जाता है। चूँकि ये स्कूल कोरंगी के इलाके में वाक़ है तो यहाँ बच्चों के वालिदैन बच्चों की फ़ीस और दूसरे तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा ये स्कूल तमाम ज़रूरी साजो सामान से आरास्ता है। इसके अलावा यहाँ तालीम इशारों की ज़बान में मौजूदा किताबों की मदद से सिखाई जाती है। जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेफ की मेहनत से बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ तरबियत याफ्ता असातिज़ा मौजूद हैं जो कि ख़ासकर इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में महारत रखते हैं। यहाँ हम इशारों की ज़बान भी सिखाते हैं। यहाँ पर एक मुकम्मल इशारों की ज़बान पर मुश्तमिल कुकिंग का हुनर भी सिखाया जाता है। सिलाई और कढ़ाई के लिए ख़ास क्लासेस बनाई गई हैं। यहाँ बच्चों को दूर दराज इलाकों से लाने के लिए स्कूल वैन का भी ख़ास इंतज़ाम है जो कि गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इसके निचले हिस्से में हॉल भी बनाया गया है जो कि किसी भी किस्म की तकरीब में काम आता है। Wow, that was very insightful. Now it's time to listen to the man behind the vision of Pakistan Association of the Deaf, the chairman himself, Mr. Irfan Mumtaz.
always, the student societies at Greenwich University have played their parts for events as special as these. It's time to watch a short documentary that our talented students from Performing Arts Society have prepared in order to highlight the significance of sign language for the deaf people as the mode of communication. आपको समझ आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इनके हार्ट में भी दर्द हो रहा है, इनके हाथ की तरफ से इशारा कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद इनको हार्ट अटैक हो सकता है। Pakistan Association of the Deaf believes that inculcating technical skills and contributing to the curriculum development of the deaf community is a vital obligation in order to empathize and make them feel more welcomed. And now it's time to watch a short documentary on the deaf community. इशारों की ज़बान पर काम करना एक निहायत मुश्किल काम है, क्योंकि इशारों की ना तो कोई अपनी ज़बान और ना कोई रस्मुल ख़त होता है। इसलिए पहले से मौजूद रस्मुल ख़त के इशारे बनाकर ही समाज से महरूम बच्चों को तालीम दी जा सकती है। किसी भी ज़ुबान पर काम करने के लिए उस ज़बान पर महारत होना बहुत ज़रूरी होता है, और समाज से महरूम लोग इस ज़बान पर महारत रखते हैं क्योंकि ये उनकी मादरी ज़ुबान है और इस पर सिर्फ समाज से महरूम लोग ही काम कर सकते हैं। किसी भी किताब के डेफ साइन लैंग्वेज रिसर्च ग्रुप के इशारे बनाने के लिए पहले माहिरीन बाजार से एक अच्छी किताब खरीद लेते हैं। उसमें अल्फाज के इशारे अगर मौजूद हों तो उनसे इन लफ्ज़ों को अलग करके इन लफ्ज़ों के इशारे पर काम किया जाता है। फिर एक एक लफ्ज़ पर गौर व फिक्र किया जाता है कि इस लफ्ज़ के माने क्या हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह होता है और इस लफ्ज़ को डेफ कैसे समझते हैं और इनका मुमकिना इशारा क्या हो सकता है। इस तरह एक इशारा बन जाता है। जब उसको डेफ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इशारों की ज़बान का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह एक तवील रिसर्च के बाद एक किताब बन जाती है। अब तक ये ग्रुप 21 किताबें लिख चुका है और ख़ासकर प्राइमरी की किताबों पर काम जारी है। Wow, that video really struck a chord, at least with me. It's now time to listen to our chief guest, Mr. Sadiq Ali Memon, the Special Assistant to CM Sindh, while he delivers his address. Assalamu alaikum. My name is Sadiq Ali Memon. I am Special Assistant to Chief Minister of Sindh. I've been looking after the Department of Empowerment for Persons with Disabilities. Today is 23rd September 2021, which is International Day of Sign Languages, and I'd like to facilitate the deaf community on this day. What we have done with this department as far as sign language is concerned, what we've tried to do is unify the different sign languages prevalent in this country. And in this regard, we've engaged with several organizations working for this cause, especially Pakistan Association of the Deaf, which they have done some tremendous work, and they have come up with over 4,000 signs along with working with 5 different organizations. Also, they've translated a number of books into signs, which is, I think, a great achievement. Once again, this department, since its establishment, what we've tried to do is to empower the people with disabilities, not only just the deaf community. What we've tried to do is to ensure that they get their rightful share in education, in employment, in skill development. We need to provide them with proper legal cover so that we can look into any discrimination that is done against them. What we want is that all the persons with disabilities, these are the marginalized communities, and on behalf of Sindh government and our party chairman, Mr. Bilal Bhutto Zardari,
We would like to ensure that they get their due share so that they can become a very functional part of the society. Thank you so much. Thank you, Mr. Sadiq Ali Memon, for your time and message on this auspicious day. According to the World Federation of Deaf, there are more than 70 million deaf people living worldwide, and around 80% of them are from the developing countries. We as a community can work together towards making the deaf people feel welcomed, feeling more at home, and we encourage everyone to take a message back from this event, and we hope that they use it in their daily lives, because everyone has a path of their own to walk, but they do not have to walk it alone if they have someone by their side. Indeed, sign language is the noblest gift God has given to the deaf people. Thank you.